Bengal sailors. I hope that you guys have seen this. Seen in is a read this poetry. पढ़ी होगी कब मेरे को पता है जब मैंने I was in 5th or 6th standard I studied this poetry. Yes, Bengal sailor, one of the best poetry again by Sarojini Naidu. आपने कहा Sarojini Naidu की poetry सर clear करनी है and we are talking about English writing. Oh, the English writing in India. इसका टॉपिक है हमारे पास इंग्लिश स्टूडेंट्स एमए इंग्लिश एंड ऑल द अदर स्टूडेंट दो वाचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो पूरी देखना गाइस ताकि आप इस पोइट्री को ऑन टिप कर पाओ। थोड़ी सी बढ़िया पोइट्री तो इसको क्लियर करना एज कंपेयर टू अदर पोइट्री सरोजिनी नायडू। Bengal sailor we who bear, Bengal sailor are we who bear, O shining lords of temple fair, who will buy these delicate bright, rainbow tinted circles of light, lustrous token of the radiant lives, for happy daughter and a happy lives, for happy daughter and a happy lives. Some are meet of the maiden wrist, silver and blue as a mountain mist. Some are flushed like the birds and dream, on the trunk like blow of the woodland stream. Some are the glow with a blow that cleaves, to limit glory of the newborn leaves. Some of like the birds of the sunlight corn meet a bride on her bridal morn. Some like the flame of the marriage fire, or rich with the hue of the heart desire. Rich of the hue heart desire. Tinkling, luminous, tender and clear, like the bridal laughter and a bridal tear. Some are purple and gold, flocker gray, for she who has journeyed through the life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradle fair sons of warm, fruitful breast, and serves her household in fruitful pride, and worship the gods at her husband's sides. अब सर इस पोइट्री को समझ लेंगे। बैंगल्स की बात करें, सो ये टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बैंगल, कितनी इंपॉर्टेंट एक लड़की की लाइफ में बैंगल्स की वैल्यू कितनी है, स्पेशली व्हेन शी इज मैरिड शी यूज्ड टू वियर बैंगल्स। अच्छा, उसके हाथ में बैंगल्स दिखती हैं, आप बोलते हो सिंबलाइज करते हैं मैरिड वुमेन हो। Come to the point. The poem begins with the speaker introducing themselves as a bangle seller who sell their articles at the temple fair. Bangle seller वो बज कहाँ बेच रहा है, मंदिर के बाहर। They call out the people to buy the bangles. The hawker described the bangles as a delicate, bright, rainbow-tinted circus of light. बिल्कुल रेनबो दिखता है, होता है सर्कस ऑफ लाइट। दे एडवर्टाइज बाय क्वेश्चनिंग दैट हु विल बाय दीस बैंगल्स फॉर द डॉटर एंड वाइफ। कौन लेगा बैंगल्स अपनी बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, डेफिनेटली चीजों को हाईलाइट करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट द स्पीकर्स ऑफ द पोएम आर सेवरल, एक नहीं है कई सारे। It appears if they are single speaker, this is due to the fact that they have all the some purpose and does seen singularly as a class essence. Also, the bangers are here called lustrous tokens of radiant lives. Life को lustrous बनाते हैं, मतलब we have the just to live that life. It shows that the Indianness of the poem. Now, where the bangers are brought on a special occasion associated with the happiness and prosperity. Bangers happiness को define करते हैं, bangers prosperity को define करते हैं। सर married women definitely wear bangers, तो prosperity है उनकी। The second stanza onward, the speaker talk about the kinds of bangles they have. अच्छा, वो कैसी कैसी bangles हैं उनके बारे में, उनकी बात करता है। They talk about the bangles, how many kind of bangles they're having. Some of these bangles suited for the maiden, that is a young unmarried woman's wrist. So यहाँ पहले क्लियर करना, कह रहा है some, I repeat this really important. Some of these bangles are suited for a maiden, that is a young unmarried wrist. कुछ bangles जो लड़कियां तो married नहीं है, unmarried girls, उनके सूट करती हैं, उनके लिए हो। They are silver and blue in color and like the mountain mist. बिल्कुल उनके कलर को भी कंपेयर करते हैं the mountain mist. They are silver and blue in a color like the mountain mist. Some of them the flowers that is pink and light, red in colors like flowers, birds growing beside the woodland stream. Still others are green and glowing like the transparent beauty of newborn leaves. अच्छा, उससे कंपेयर किया किससे, न्यूबॉर्न लीव्स से कंपेयर किया उनको। In Indian society, bangles are an important culture and religious place. Different color bangles are worn by women at different stages of life. Blue, silver, green are generally worn by the young maidens. It is interesting to note that the poets here uses the words "flourished like the birds that dream." Flourished like the birds that dream. The word birds here suggested the chastity. Birds that dream, present before us as image of young girl dreaming of marriage. Yes, the young girl who is dreaming of marriage. कि कल को शादी हो गया, and what is going to happen?
In the stanza, the poet presents the stage of youth in a woman's life. Youth को define करता है, youth in woman's life. Yes, that's the best part of a woman life. यहाँ तक connect कर पा रहे हो पूरा? I hope बड़े अच्छे clear कर रहे होगे. In the third stanza, that's really important one. The bangle seller says some of the bangles are yellow, like fields of sunlit corn. अब yellow को sunlit corn से compare कर रहा हो. Bangles of the color are perfect for a bride of the bridal morn. Some of the bangles they have bright red. They present the flame of newly turned bright marriage fire. वो brightness को define करता है जिसकी marriage अभी भी हुई है, newly married. That is the passion of newly made relations. The red bangles also stand for the heart's desire. The bangles are tinkling, luminous, tender, and clear. They express both the joy and now starting a new life with a husband and a sorrow of leaving her parents behind. तो colors signify life state. Colors signify करते हैं life के traits को, उनको define किया उसने. Come to next one. What we find striking the use of words, bridal laughter and bridal tears. The words convey the whole of the woman's transition of life from a maiden to a wife and all emotion attached with it a single line. This stanza makes the transition of life from the maiden to a wife. In the final stanza of the poem, the bangle sailor. Guys, please start writing this. इसको थोड़ा धीरे कर लेना और अगर सुनने में दिक्कत हो रही हो तो क्योंकि आपको ये ऑन टिप होना चाहिए. In the final stanza of the poem, the bangle sailor, the speaker, continue to advertise their bangles. They shout, but some of their bangles are purple and gold flicker gray. सर यहाँ पर्पल और गोल्ड फिकर के बोला. दीज आर सूटेड फॉर मिडिल एज वुमन. अच्छा, कलर एज को भी डिफाइन कर रहे हैं. कलर खाली आपको मैरिड या अनमैरिड नहीं बता रहे, वो आपकी एज को भी डिफाइन कर रहे हैं. द मिडिल एज वुमन हु हैज जर्नी थ्रू द लाइफ. They are her who has raised her children well and has remained faithful to their husband and family. These bangles are, they say, perfect for who has maintained her household with pride and worship the gods at her husband's side. वो अपने God को भी worship करते हैं for their husband sides. तो women definitely color reflect their age, color reflect their traits, color reflect their emotions. That's bangles. Come to the last stanza. In this stanza, the poet writes down the perceived as the qualities of good wife. Such a woman is truly deserving of purple and gold flicker grey bangles in her eyes. Here we should pay attention to the words. Sons used to mean offspring. While it could be a happy coincidence, it could also suggest that the ingrained attitude of the male, preference of the society of the Sarojini Naidu times. So उसने define कर दिया, क्या दिया? कह रहा है इनग्रेन्ड एटीट्यूड ऑफ मेल प्रेफरेंस इन द सोसाइटी ऑफ सरोजिनी नायडू टाइम्स. क्योंकि हर पोएट अपने टाइम को डिफाइन करता है अपनी पोएट्री में. तो यहाँ कहीं ना कहीं सरोजिनी नायडू ने अपने टाइम को डिफाइन किया थ्रू दिस पोएट्री एंड द कलर्स ऑफ बैंगल्स. The poem The Bangle Seller is a celebration of female life. It shows the various stages of woman life and attempts to represent the Indian culture and the role of bangle seller in tradition setup. आप कैसे एक ट्रेडिशन को सेटअप करते हो? हाउ यू सेट अप अ ट्रेडिशन. वो ट्रेडिशन कितना काम करता है, कितना डोमिनेंट है, आप कैसे क्लियर कर पाते हो. इफ यू गाइस हैव सब्सक्राइब मेरे चैनल तो आपने देखा होगा कि मैंने अभी सरोजिनी नायडू की 3 पोएट्रीज वन बाय वन अपलोड की. तीनों पोएट्रीज में सरोजिनी नायडू के राइटिंग स्टाइल पे काम करना जरूरी है. द यूज ऑफ प्रोसोडिक फीचर्स, metaphors, or the poetry devices, or the prosodic features, and how she convey her message थ्रू हर पोएट्री. और उसकी पोएट्री पूरी तरह सोसाइटी को डिफाइन करती है. शी टॉक अबाउट सोसाइटी इन विच शी वाज बीन रिवीलिंग. आप बोलते हो जहां पे वो रह रही है उसको डिफाइन करती है. टेक एन एग्जांपल पालकनी बेरर. आप बोलते हो पालकनी बेरर का एग्जांपल लेते हैं. वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री that do have a rhyming scheme and approaches in the poetry like simile and metaphor as and like was being used there. उसने उसको वहां ट्रेट किया, पूरी तरह एक्सप्लेन किया. Then the bride of fire, where she was talking to fire, the color that we do have, how the bride going to deal with the circumstances, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे क्लियर करते हैं. And then finally we'll come to the bangle seller. अब बैंगल सेलर कितना कन्वे करती है, आपको बेसिस को कैसे क्लियर करती है, कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई. And you be able to understand कि yes, this is the best part of the poetry that is written by Sarojini Naidu, जिसको क्लियर कर सकते हैं. सारी पोएट्रीज में कनेक्शन है जो जोड़ता है सबको एक साथ एक फेज में. तो इसको प्लीज फॉलो करें गाइस.
किसी तरह कोई भी दिक्कत आती है, कम टू द कमेंट बॉक्स. यस आई नो दैट यू गाइस हैव एन एग्जाम, तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो पूरी. आई विल कम ऑन अ लाइव सेशन, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए. Catch you very soon with a new video. Bye guys.